Happy Teachers Happy Day. Teachers Day. Teachers Day to all of you. Thank you very much. Thank you, Raghu sir, for that beautiful musical opening. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे और इस बदलते दौर के साथ टीचर्स और स्टूडेंट की भूमिका किस तरह से बदली है, साथ ही समय के साथ पाठ्यक्रम में किस तरह का बदलाव आया है और सबसे महत्वपूर्ण क्या पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ रहा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा, प्रिंसिपल मिरांडा हाउस। आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर भी हैं। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे रघु रामाकृष्णन अय्यर सर का। आपने इनकी म्यूजिकल धुनें तो सुनी। आप अमिटी यूनिवर्सिटी से हैं और 2003 में आपने वहां पर पब्लिकेशन डिवीजन भी प्रारंभ किया। वार्म वेलकम रघु सर। साथ साथ हम वेलकम करना चाहेंगे पुष्पा झा जी का, जो कि प्राइमरी कॉलेज से हैं और एक कॉमर्स की टीचर भी हैं। वेलकम टू आवर प्रोग्राम मैम। थैंक यू सो मच। आज सबसे पहले बिल्कुल हम याद करेंगे भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनकी जन्म जयंती को भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तो प्रोफेसर नंदा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो कोट है, द ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स, क्या लगता है आज एजुकेशन के मायने क्या हैं? बिल्कुल सही बात है कि टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्व्स। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, वो भी यही कह रहा है कि टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयरफॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. So teachers in that sense play the most important role in nation building by creating high quality human beings. And इसलिए मुझे लगता है salute to all teachers in every sense of the term. I completely agree with that quotation and salutations to that great man who has brought in this idea to all of us. थैंक यू मैम। रघु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से टाइम बदल रहा है, तो आप टीचर्स के रोल को किस तरह से देखते हैं? The teachers of yesterday, the teachers of today, and teachers forever will remain the same. क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो भी हम जो हैं आज, उन्हीं के because of them only we are here what we are. See, the moment you are born absolutely without any knowledge at all. जिन्होंने आपको तालीम दिया है और आगे बढ़ने की क्षमता दी है और एक माध्यम दिखाया है, वो माँ बाप हैं और उसके साथ ही साथ टीचर्स हैं। टीचर्स, टेम्पल ऑफ लर्निंग, all go together. So teachers, in my opinion, get the highest priority in life. If there are no teachers, the taught will never be there. आप स्वयं आज टीचर हैं, अकाउंट्स कॉमर्स पढ़ाती हैं, लेकिन जब आप स्टूडेंट थी तो आपकी क्या यादें हैं आपकी टीचर्स की? जी सर, बहुत सारी यादें हैं। मैं इंद्रप्रस्थ स्कूल की छात्रा थी और हमारी मैम थी नीलम जैन मैम, कॉमर्स की टीचर थी। तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो हम जैसे क्वेश्चंस पूछते थे, उस टाइम में ऑनलाइन का तो कोई सिस्टम था ही नहीं, सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। तो हम वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी थी, तो वो 2 सब्जेक्ट हमारी लेती थी, अकाउंट्स की और बिजनेस, दोनों पढ़ाती थी। तो काफी ज्यादा अच्छा लगता था, हमारे ग्रुप्स बने हुए थे टीचर्स के साथ, हम लोगों का फ्रेंडली रिलेशनशिप भी था कि जो भी हमें क्वेश्चंस पूछने होते थे तो हम उनसे डरते नहीं थे, थी स्ट्रिक्ट बट हमारा ध्यान रखती थी। हम उनसे क्वेश्चन डांट भी खाते थे, लेकिन पूछते भी थे और रिप्लाई भी करती थी, तो अच्छा था हमारा। जी तो प्रोफेसर नंदा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बीइंग ऑनलाइन पढ़ाने के समय में ऑफलाइन की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक बीइंग अ टीचर आप मिस करते हैं?
I think the most important thing that a teacher misses is looking at the faces of her students and having a vibrant connection. That vibrant connection is missing. I mean that, and however, hats off to all teachers who during this COVID time learned the online method of teaching and remain connected. मैं तो teachers को एक नाम दी हूँ, जैसे कि COVID warriors है, जो doctors है, health workers है, मेरे लिए teachers जो है वो COVID healers है. वो हर घर में आके कंटिन्यूटी उन्होंने मेंटेन किया. लेकिन डेफिनेटली वी वांट देम, एंड आई थिंक ऑल टीचर्स सैल्यूट इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म कि वो कोविड हीलर्स रहे हैं. हमारे घर तक आके छोटे बच्चों को स्पेशली वर्ड्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच यंग चिल्ड्रन, कीप देम एंगेज. अभी आपने पुष्पा जी को देखा, बच्चे सब शोर मचा रहे हैं. तो आई थिंक connected in an online mode, it requires a lot of, bringing in a lot of different pedagogies. तो मैं तो कहूंगी कि टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा इस दौरान. कॉलेज टीचर्स ने, स्पेशली सीनियर टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा माध्यम उन्होंने अपनाया, पेडागोजीज सीखा, फ्लिप क्लासरूम की अंडरस्टैंडिंग लाई. तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ एन एम्पावर्ड एंड एम्पैथेटिक टीचर, वो चीज जरूर है. लेकिन ऑनलाइन में इंक्लूजन उतना हो नहीं पाता है. कुछ बच्चे जो बाहर रह जाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं. और जो वाइब्रेंसी है क्लासरूम में, कभी कोई कुछ बोल रहा है, आप क्लासरूम के मूड देख के क्लास को स्ट्रक्चर करते हैं. तो ऑनलाइन में उतना पॉसिबल नहीं है. लेकिन ब्लेंडेड मोड अच्छी बात है. जो ऑनलाइन में आज हमने सीखा है वो ब्लेंडेड मोड में हम यूज कर सकते हैं, और उससे हमारी स्किल्स बहुत बढ़ गई है. जैसे पीपीटीज दे रहे हैं, या पेडागोजीज ऑफ यूजिंग क्विजेस, यूजिंग द, और इंटरनेशनली हम जुड़ सकते हैं. एक ग्लोबल जो पॉसिबिलिटी है, ग्लोबल विथ लोकल, वो पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं. तो कोर कॉम्पिटेंसीज जो टीचर की है, क्रिएटिविटी की कॉम्पिटेंसीज बढ़ी है, बट नथिंग लाइक ह्यूमन कनेक्शंस वेयर यू आर इमोटिवली कनेक्टेड इन द सेम रूम and seeing the vibrancy of the classroom. It's like seeing spring in front of you and seeing spring on a visual mode. Difference to zarur hoga. You can't see. So that's basically. Yes. May I add something to this, please? Yes, please, Raghu sir. You see, my biggest complaint and grievance is the children are losing out on the innocence of childhood and suddenly graduating into adulthood. This is very unfair. Post-COVID, this is exactly what is happening. Kids are getting to know about anger, zero tolerance level, stress, tension, without their knowledge, because they have been thwarted from going out, because education is not confined to the four walls of the classroom. It's much, much, much more. It's a lot more outdoor. सब में रुकावट हो जाती है. The child does not grow in the way a child is supposed to grow. This is absolutely very unfair, and I'm not blaming anybody. The time that we are going through is not a difficult period, it's a very different period, the like of which we have never seen in our lives before, the like of which we'll never see again. I hope not, but it has had its impact. This is one of the adverse impacts. Children should be children. They should climb trees, fall down, hurt themselves, do all sorts of pranks outdoor. That is all missing. That's what I'm feeling. They're only confined to the online classes, and as a relief measure, go to the father and mother and have some fun with them, or show their anger, because they can't show their anger anywhere else. So this is exactly the aftermath of post-COVID. जी, तो ऐसे में पुष्पा जी, आपको लगता है कि पेरेंट की भूमिका में भी बदलाव आया है, क्योंकि अब बच्चा स्कूल नहीं, अधिकांश समय घर पर है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, तो पेरेंट्स की भी भूमिका में थोड़ा और बदलाव है कि उन्हें भी एक टीचर के रोल में भी आना पड़ेगा? जी सर, बहुत सारे बदलाव आए हैं. पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है. जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है 8:30 सपोज किसी की शुरू हो रही है, तो पहले तो ये था कि मॉम डैड की ये जिम्मेदारी थी, उन्हें रेडी करो और लंच दो और भेजो स्कूल. अब उन्हें पर क्लास ध्यान रखना पड़ रहा है कि बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया या नहीं किया, और टीचर्स भी काफी एक्टिव हो गए हैं. अब वो पेरेंट्स से भी बात करते हैं कि आपका बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो पेरेंट्स की भूमिका डबल हो गई है. अभी वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, और टाइम से उनकी ज्वाइनिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. तो पेरेंट्स की भूमिका ऑब्वियसली बहुत बढ़ गई. प्रोफेसर साहब, टीचर्स की फेवरेट जो लाइंस होती थी, उनमें किस तरह का बदलाव आया है? हमारे जमाने में फेवरेट लाइन थी, कैन आई हैव अ पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, और अब शायद आप लोगों के जमाने में है, कैन एवरी स्टूडेंट स्विच ऑन देयर वीडियो. तो कौन कौन सी लाइंस हैं?
so in college switch on the video bhi hum nahi kehte hain, because there is this whole thing about privacy and all of that. So I think, can you hear me? Can you see me? Can you see? It's almost like a seance. So you keep asking these questions. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? Are you able to? Those are the new ones on a online platform. They become the most important ones. The other thing that has become very, very important is that, are you there? क्योंकि वो एक होता है कि are you there, because your screen may be there but you may not be there. So are you there online? So ये सारे एक in a fun-filled atmosphere. Some of the teachers say, are we teaching them or are they online? How do we know that? But having said that, our students are very, very committed to being in the classroom. But yes, it does get a little boring in the sense that it is all, and we try to have certain things called breakout rooms. हम बहुत breakout rooms की use करते हैं so that वो एक दूसरे से भी बात करें. I think Dr. Raghu Iyer ने बहुत अच्छा आपने ये point कहा कि they are losing out on the innocence, on friendships. So we are aware of that. So we try to create हमारी काफी cultural activities हमने online करवाई. And we try to get them in smaller groups to college, especially for local in-person students. So that's about it, I would say. And of course, are you there is a very important one that comes in now. मुझे लगता है अमित जी कि एक चीज और है जो सारे टीचर्स मिस कर रहे होंगे, वो है पनिशमेंट. वो भी शायद बहुत ज्यादा मिस हो रहा होगा. अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि हर बच्चा जो होता है वो एक जैसा नहीं होता. एवरी चिल्ड्रन आर अलाइक. तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो माइंड जिनका शार्प होता है, जिन्हें इजीली चीजें समझ आ जाती हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक होते हैं. उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम कितना यूजफुल है? रघु सर, आप बताएंगे मुझे. Before that I want to add on something to what the professor said. Are you there? It is such a loaded statement, because the student is there and still not there. और ध्यान से सुन रहा टीचर क्या कह रही है, लेकिन he is busy playing the game, online game. That means he has learned the art of multitasking. He is listening and he is also playing. These are various things that the child goes into. But I think at the end of it all, a child is a very bored person, because उसको एजुकेशन का मतलब, शिक्षा का मतलब स्कूल है. Ultimately, it begins and ends there, not in the four walls of your house, not with all the computer gadgets. No way. You can have his attention focused for a while, but learning is much, much, much more than that. The interaction with the peer group, the physical interaction with the teachers, the love-hate relationship, the annual functions, the annual sports. The new generation, let me assure you all, ladies and gentlemen, the children are going to lose on this. It's a very sad commentary. They're going to lose on this unless the world order is changing. The change that is happening is the change that we are bringing in. मुझे यकीन है कि ये जो है ये घड़ी भी निकल जाएगी, and we'll be back to square one. We'll all be a happier lot. We'll all be a fun lot. But the future history books will definitely make a mention of this in different time, pandemic time. Yes, interesting कि आपने हिस्ट्री की बात की. प्रोफेसर नंदा, मौजूदा दौर में फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं लोगों के? एक वक्त था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, लेकिन अब तो नए सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे पर्सनल फाइनेंस, न्यूट्रिशन. तो क्या नए सब्जेक्ट्स भी आ गए, क्योंकि ऑनलाइन में अब करिकुलम ग्लोबल हो गया है? So see, the structured syllabus remains the same, and जो नए subjects अभी आए हैं choice based credit system में, अब NEP में अलग changes आएंगे, कॉलेज लेवल का बता रही हूँ, तो उसमें political science की काफी importance बढ़ी है इस दौरान, मतलब it is nothing to do with the pandemic, but with the pandemic the new courses that have come up which have greater importance. लेकिन आप ये जान लीजिए, this online course was to continue with education and it has played a major role, especially because of the pandemic. A greater good है ना, you have to save lives. So in that sense, this is a major contribution. It is an opportunity coming through a challenge. लेकिन उसमें environmental ethics पे बहुत सारे courses हो रहे हैं. How to look at the future of work, remote work
उसकी लर्निंग, एक स्किल डेवलपमेंट की लर्निंग हो रही है। पब्लिक हेल्थ पे बड़े कोर्सेस आए हैं, looking at an interdisciplinary or multidisciplinary approach where health, environment and issues around policy come together. तो इस तरह के कोर्सेज कंस्ट्रक्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, यूजीसी स्वयं के सारे कोर्सेज जो है बड़े ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, बट विद अ कनेक्ट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सो एंड विद कल्चरल वैल्यूज जो हमारे आयुर्वेदा में और इस तरह की जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज बेस था उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है. सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ वेरी वाइब्रेंट कोर्सेज कमिंग अप. आई होप वी विल कंटिन्यू दैट इन द later mode where we are having it in a blended way. Yes, definitely the pandemic has brought in a new knowledge, epistemic knowledge base, definitely. I agree with you. Raghu sir, I would only like to endorse what the professor just said. It makes a lot of wisdom and a lot of educational sense. एक तो है, I like to add on, कि the mother tongue has been given a lot of importance in NEP. The language that you speak, the local language, that has been given a lot of importance. And also the children coming into the mainstream of education right from age 3. Now there will be divided opinion in this. कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे को 5 साल के बाद स्कूल में जाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि 3-5 साल तक बच्चे को छोड़ दो, कुदरत के साथ छोड़ दो उनको. They should enjoy, they should make all sorts of pranks and things like that. It belongs, the nature belongs to them. 5 के बाद करो. I went to school only after 5. I don't think you find anything wrong with me. So the point is, they have made a lot of improvement. Now coming back to Professor's point, adding on to the new courses, very vibrant courses. Till in our generation, the mainstream course used to be physics, chemistry, maths, English, वगैरह वगैरह. Now you have skill-based programs. You've got art. You've got so many to choose from. You know what it does? It tries to unearth the latent talent in a child. कोई दबाव नहीं है बच्चे के ऊपर. The child can do whatever he or she wants, whatever she or he is capable of. उसके अंदर भी कुछ wonderful heart. I mean, what would I say? Talents हैं. उसको बाहर निकालिए आप. NEP tries to aim its new program towards this most importantly. I think I welcome NEP's new programs, and after so many years, every year, every government promises to bring in some changes. But I think NEP this year around, it makes a lot of knowledge sense. I welcome it very much, only because the platform is open to each and everyone. Each child can come on its own merit. तो अगर पुष्पा मैम अगर बात करते हैं, अगर हम लाइक 3 to 5 ईयर एज के किड्स की, तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी उन्होंने जस्ट स्कूल ज्वाइन किया था और अभी से ऑनलाइन क्लासेस, तो उनके लिए अडॉप्ट करना इस सब चीजों के लिए कितना टफ है? बहुत टफ है मैम, बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि जब बच्चे जैसे प्ले में हम डाल देते हैं, 2 से 2.5 साल में डाल देते हैं हम बच्चों को, तो जब वो फिजिकली जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें, उन्हें फ्रेंड्स मिलते हैं, वहाँ पे खेलने का सामान होता है, तो वो इजीली चीजों को अडेप्ट कर पाते हैं, वो सीख पाते हैं. लेकिन ऑनलाइन मेथड में आप उन्हें घर में बिठाओ, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस दिलवाओ उनके, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ना टीचर से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ना वो अपने फ्रेंड्स को जान पा रहे हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है. ऑफलाइन में अगर वो जाते हैं तो उन्हें जैसे राइम सिखाए जाते हैं, तो वो गा करके सिखाए जाते हैं एक साथ, तो वो जल्दी उन चीजों को सीख पाते हैं. लेकिन ऑफलाइन में उन्हें वर्कशीट भेज दी जाती है, अब वर्कशीट वो बच्चा तो कर नहीं सकता, तो मोस्ट ऑफ द उनके पेरेंट्स ही करके भेज देते हैं, तो ये सब डिफिकल्टीज आई है. तो रघु सर, मैं असेसमेंट के बारे में जानना चाहूंगा कि जो भी पढ़ाया जाता है जरूरी है कि असेस भी करें. आपको लगता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन का दौर है, एंटरप्रेन्योरशिप पे बल है, क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, क्या ज्यादा से ज्यादा ओपन बुक एग्जामिनेशन का दौर आने वाला है? Amit, open or closed, my view is very simple. It depends upon the teacher and the way he or she
is able to bring out the best in the child. अब एक उदाहरण देता हूँ. I finished my school some 45-50 years back. लेकिन आज भी आप हमसे पूछें a square minus b square क्या है, तुरंत मैं बता देता हूँ a minus b into a plus b. और a cube minus b cube is equal to a minus b a square plus ab plus b square. और tan a is equal to sin a by cos a, or cot a is equal to cos a by sin a. It depends upon the teacher how the child progresses. You have a good teacher who goes beyond the teaching thing, goes at the emotional level, personal level, and you see the gem that comes out. That is what we want. Whether it is a closed examination or open examination, a child does better depending upon the quality of teachers. तो प्रोफेसर नंदा, क्या मेथोडोलॉजी टीचर को अपनानी चाहिए? क्या स्टोरी टेलिंग एक तरीका हो सकता है, या जैसे अभी रघु सर कह रहे हैं, मुझे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से याद था, साइन थीटा कॉस थीटा, कहानी के माध्यम से, नाटक से, कविता से, क्या नई मेथोडोलॉजी अपनानी होगी टीचर को? डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी फोकस यही है कि कोर कॉम्पिटेंसीज पे वर्क किया जाए, क्रिएटिविटी पे वर्क किया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, नॉट जस्ट इन क्रिएटिविटी बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, उनको फील्ड बेस्ड नॉलेज भी दिया जाए, ये नहीं कि सिर्फ रोट लर्निंग हो. So rote learning is not what we are trying to encourage, irrespective of the fact that we had a very vibrant education system always in India. Our focus was always on rote learning. So abhi rote learning se move karke experiential learning. So you know, if you are looking at, let's say you're trying to understand the political system and you're doing it through the books, so as much of exposure to the parliament, to the debates that are there, taking them there, taking them to field visits, helping them to work with members of parliament, giving them exposure to the Niti Aayog work. They work there as interns. तो उस तरह के knowledge base पे अब focus है. Flip classroom भी एक होता है जहाँ student खुद teacher बन के हमें पढ़ाते हैं. Pedagogies बहुत change हुए हैं and there's a focus. But उसमें teacher की capacity building बहुत जरूरी है. And there is a huge focus in the NEP, in the National Education Policy, on creating the empowered teacher. जब तक आप एम्पावर्ड टीचर नहीं बनाएंगे, जैसे रघु सर ने बताया, और हमारे टीचर्स या आपके टीचर्स, जब तक वो एम्पावर्ड एम्पैथेटिक टीचर नहीं बनेगा, तब तक you will not be able to create these kinds of students. So I think the onus of responsibility is on capacity building. तो किस तरह से हम facilitate करेंगे ये training? NEP has given a lot, but every institution has to train teachers and be sensitive to the needs of the teachers. But capacity building is an important part of this learning. जी, प्रोफेसर नंदा, इसे जी रघु सर. Add a little more to what the professor just mentioned. I think the rote learning that she makes is tremendous sense. Second is, we are already talking a lot about this concept. The child has to learn the concept of any subject, of any item that is being taught, because once you learn, the perception becomes easier. Once you learn the concept, the perception, the understanding, and therefore the interest in the subject is absolutely expanded. Therefore, it depends upon the teacher. Once again, I assert, teacher and good teacher, quality teacher is directly proportional to the quality student, always. So, Professor Nanda, before you ask, क्योंकि मेरा वीडियो बीच में बंद हो गया था, पुष्पा मैम का भी, both of us will like to say we are very much there. We are very much there. Just some network issues, ma'am. लेकिन fun-filled और joyful learning बहुत जरूरी है, because if it is not joyful, it is not learning. तो अगर आप सबकी permission हो, तो रति आपके साथ एक fun-filled activity करना चाहेगी. Yes. मुझे लगता है कि अभी हमने काफी सारी टीचिंग के ऊपर बहुत सारी बातें कर ली हैं. अब इट्स द टाइम, बिकॉज आप लोगों का दिन है ये, तो आप लोगों के साथ भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. तो कुछ एक छोटा सा क्विज है, एंड आई होप कि मूवीज देखने का और सॉन्ग्स को सुनने का सभी को शौक है ही है, और रघु सर का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो एक छोटी सी गेम हम आपके साथ खेलेंगे. तो आर यू रेडी? यस मैम, रेडी. तो अमित जी, क्या आप स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे? तो हम लोग आपको कुछ इमोजीज दिखा रहे हैं. आपको जो है उससे सॉन्ग का नेम गेस करना है.
जी, तो रूल्स Okay. बहुत सिंपल हैं कि हम आपको बस अब एक स्लाइड दिखाने वाले हैं, आपको उस तस्वीर के माध्यम से बताना है ये कौन सा हिंदी गाना है. So looking at these symbols, you have to judge which Hindi song these symbols represent. So here comes the first slide. And nobody will make noise. You just have to raise your hands. Yeah, just raise your hand and then Rati ma'am will request who answers. मैं Raghu sir. मेरा जूता है जापानी। जापानी पतलून इंग्लिस्तानी। Maybe all एक बार प्लीज सब गा के सुनाइए प्लीज. पुष्पा सब के मैम, सब गा के सुनाइए. पुष्पा मैम गा के भी Okay. बताइए. बस उसके बाद मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। Very nice. So Raghu sir is leading 1-0, but you still have chance to catch up. So here's the Yes. second slide. All the best. Raghu sir is raising hand. The other two, you want to try? We'll wait another 10 seconds. Pushpa ma'am, Professor Nanda. See, this is how teachers give us difficult questions all these years. my knowledge on this in this field is very limited. What is this? Well, I am sorry. If Raghu sir gets this right, he gets unassailable lead. What we are wanting India to do today against England. Go 2-0 up. Yes, Raghu sir. एक दो तीन हुई है। No? No, that's not the right answer. -1. So all three of you are now at 0. इसे एक लड़की को देखा तो Yes, yes. Yes, लड़की को देखा तो ऐसा right. लगा. Professor Nanda, now your turn to sing this song. I don't know this. I'm a very bad singer, but I thought. Okay, we'll request Pushpa ma'am. Pushpa ma'am can sing. Yes, Maybe you that can- Ma'am, only Professor Nanda ma'am. Okay. एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे I don't know. That's how much I remember. Very nice. See how much a thriller this is. That Raghu sir from 1 has gone back to 0. Professor Nanda on 1. Pushpa ma'am still on 0. And let's see. This is the decider. The last one. All the best. It's very easy. You've got 30 seconds to think through. Wow, this time Very easy. Professor Nanda and Pushpa ma'am and Raghu sir is still thinking. Tables have turned. I go or I will give it to Pushpa. Yes, Pushpa This ma'am. time Pushpa ma'am can sing. I know this song. Very Let good. us sing it. Raghu sir, I'm sure mouth organ पे भी आपने ये गाना कई बार बजाया होगा. Oh, cheating! No cheating. Raghu sir, Cheating! no Ma'am, open cheating. cheating! Open cheating! No cheating. I don't know. Okay, Professor Nanda, please. नहीं Puno Pushpa ma'am. Puno That's right. Pushpa ma'am, please sing. Please sing But the I song think we'll first. give it to Pushpa because she sings it so well. Yes. पहले मैंने जो सोचा वो सही हो तब तो मुझे लग रहा है फूल तुम्हें भेजा है खत में, शायद यही है। नहीं, वो तो No, it is प्रोफेसर साहब ने बताया थे. फूलों के रंग से दिल फूलों की के रंग से कलम। दिल की कलम से. तो रघु सर आपको ये सॉन्ग आता है? ये गाना आता है लेकिन लिरिक्स अगर मिल जाए तो मैं गाऊंगा, अभी गाऊंगा. ये सर गाइए सर प्लीज। I sing the lyrics. Lyrics है, मैं अभी गाता हूँ. I can sing it very well. Yes. Yes. यस सर। Pushpa ma'am, start. Give the start. Raghu sir will pick up. फूलों के रंग से दिल की कलम फूलों के रंग से दिल के कलम से, तो मैं खुद भूल रही हूँ इस। अगर स्टूडेंट्स भी ऐसे कह दें कि मैडम थोड़ा याद है, थोड़ा भूल रहे हैं, टीचर अलाउ कर देगा? हम तो पनिश कर देते हैं, कैसे भूल रहे हो, क्यों याद नहीं है?
Right. क्या प्रिपरेशन है, Right. ऐसे बोलते हैं. So Okay, we I'll will sing. conclude with Raghu sir's song. Raghu sir, we'll conclude with your song. So final words, Professor Nanda, as we celebrate Teachers' Day, final words. We'll conclude with Raghu sir's song. Yes. Final word is that we need to, recognize the efforts of all the teachers to have kept teaching learning going in this pandemic. I am one who does not believe in punishment, so I think we should drop that word of punishment and look at creative and collaborative learning with all our students, because they are the future of the nation. So in that sense, Pillars of the nation. yes to Absolutely. teaching, yes to learning, no to punishment. That's my Absolutely, idea. absolutely. That's why we wanted to ask that, say no to punishment, and also say no to the segregation of weak student, strong student, because every child is unique. So we have to not use these, words. Very important. Pushpa ma'am, final words. Yes sir. आई थिंक हमें समझना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि दौर बदल चुका है, तो हमें उन्हें समझ के ही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए. जी. और रति जी, आपका अनुभव क्या है? वर यू अ गुड स्टूडेंट? कभी आपको डांट पड़ती थी क्योंकि पनिशमेंट पे बहुत जोर है आपका? नहीं, मुझे एक्चुअली कभी पनिशमेंट नहीं मिला. Never. Okay, so thank you to all the teachers once again, and it has been lovely celebrating the occasion of Teachers' Day from all of you. Like you said, that are you there? Let's hope that the students are there. Students realize that teachers are there to nourish them. We're very thankful to every teacher. Every child is unique, and like the guest said, that we have to move from rote learning to experiential learning. And let's hope we can also create empowered teachers so that that vision can happen. We should have education for all and look for a very developed world society where everybody contributes to the welfare of humanity. Thank you very much. And we conclude with Raghu sir's song. We started with your music, sir. We'll conclude with your song. Thank you. You want only that song, or can I sing any other song? Your choice, sir. Any song, sir. जो भी गाइए दिल से गाइए, फूलों के रंग की तरह. पूरी डायरी है सर के पास. छुपालो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की. छुपालो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की. तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुका कर खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुका कर खड़ी हूँ प्रीतम, कि जैसे मंदिर में लो दिए की. छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लो दिए की. Thank you very much. Thank you so much, everyone, for joining us on your day. Happy Teachers' Day to everyone. Happy teachers. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. And I would like to hello teachers, goodbye pandemic. Thank you. Thank you. Happy Teachers' Day. Thank you. Happy learning.